Okay. Now there is और मार्क्स मिला आपको कुछ नहीं मिला अभी तक मार्क्स मिल रहे हैं एग्जाम का फर्स्ट टर्म का हाँ फर्स्ट टर्म का मिल गया आपको कितना मिला सेकंड है क्लास में सेकंड हाईएस्ट कितना है 80 में से 53 ओह 53 आ गया यानी you have lost heavily यस सर क्या हो रहा है where you lost basically I think the answer completed incomplete answer presentation incomplete answers डिस्कवरी पढ़ा था नहीं पढ़ा और तुम्हारा सेमेस्टर का कितना मिला हाँ वही लास्ट एग्जाम लेटेस्ट एग्जाम 18 out of 80 oh very less so where you lost blank हो गए तुम हाँ equations start writing the equations they are 48 कुछ पढ़ा ये घर में नहीं हो रहा लास्ट चैप्टर नहीं किया क्यों नहीं किया ओके तुम्हारा 28 तो ये नहीं everybody is actually what यहाँ पे पढ़ाई कुछ नहीं अर्चित हाँ 50% तुम्हारा शिवेश ना 33 बस बहुत ज्यादा मिला आपको 33 start working on it 41 so almost 50% तुम्हारा 68 out of 8 और तुम्हारा 44 सर इसका नंबर हमारा अलग है सर हाँ पता तुम्हारा स्कूल अलग है लेकिन पेपर तो सेम ही रहेगा ना क्वेश्चन क्या है हमें पूरा बुक नहीं था सर स्टार्टिंग के फिर अभी क्या करो वही पेपर लेना है तुम्हारा 4 बार लिखो सब जिसको अपना 60 के नीचे मिला है ना और जो तुम्हारा मिस्टेक हुआ है 12 बार उसको 5 बार लिखो एंड गिव इन द रिसेप्शन ऑन द रिसेप्शन काउंटर क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिस के स्टार्टिंग में जो एंटर कर रहे हो वही क्वेश्चन पेपर अटैच कर रहे हैं जेरोक्स देते all these answers which you are actually what getting wrong उसको 5 बार लिख के सबमिट करो कमिंग ठीक है then only next exam final exam आपको easy पड़ेगा तो I will tell this coordinator madam she will actually what remind you once again ठीक है और वो अपना because ये जो marks है it indicates that you are studied test ठीक है question and answer approach you are looking ठीक है then only you will get okay now चलो with let us see study of gas laws कितना कर दिया है Charles law कर दिया है नहीं only Boyd's law किया है okay today we'll do Charles law and the questions एकदम पढ़ाई करना है घर में जाके you are not studying I think so सब मोबाइल पे बैठ जाते हो राइट नेहा what do you do टीवी प्रोग्राम कोविड के बाद कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं आप फिर अरे एग्जाम के पहले जब एग्जाम नहीं होता है तो क्या देखते हैं आप कौन सा सीरियल देख रहे हैं मिडनाइट क्लब देख रहे हैं और हाँ और तुम हाँ एनिमेशन कौन सा एनिमेशन So I can't use that. ANN एनिम ये बोला ANIME एनिमे देखे तो और इधर सब मार्क्स हमारा एनिमी हो रहे ये देखो 20-25 मिल रहे हैं तो एनिमी हो रहा है ठीक है ना अच्छा और तुम क्या देख रहे हो अर्जित कुछ नहीं और गौरी तुम कुछ नहीं सर तुम देख रहे हो कौन सा मिडनाइट क्लब
ये क्या है? नहीं देखती हो। अरे लेकिन है क्या? ये कार्टून है कि क्या है? पिक्चर है कि क्या है? सीरियल है, वेब सीरीज है, क्या है? वेब सीरीज। वेब सीरीज का देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्क्स तुम्हारा पूरा 22.5 है, ठीक है कि नहीं? शिवेश तुम कौन सा देख रहे हो? हाँ, सीरियल नहीं देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो? श्योर? तुम? अरे मिडनाइट क्लब नहीं देख रहे? मला कुछ नहीं, 68 कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? हाँ, शार्दुल। Which what is the program you see in the TV? Movies. कौन सा? सुपर हीरोज। मार्वल देखते हैं। DC। हाँ? DC। क्या DC क्या है? DC। DC। ओके, D का क्या है? DC बस टाइप करेंगे DC। तो तुम कौन सा सीरियल देख रहे हो? कुछ नहीं, टीवी प्रोग्राम देखते हो। और तुम्हारा? डिसाइड बाद में हो गया, लेकिन टीवी प्रोग्राम पहले डिसाइड हो गया ना। और जानवी तुम्हारा? अरे सॉरी, ये क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी। साक्षी तुम्हारा क्या है? कौन सा प्रोग्राम है उससे? हाँ, ठीक है। और तुम शिवेश? Which TV program you 40 marks? और कौन सा प्रोग्राम देख रहे हो तुम? कौन सा? कोई प्रोग्राम नहीं, मोबाइल मोबाइल पे देख रहे हो? कौन सा फिल्म देख रहे हो मोबाइल पे? मोबाइल सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया? इंस्टा देख रहे हो? और फेसबुक नहीं, सिर्फ इंस्टा है। और इंस्टेंट मार्क्स मिल रहे हैं। व्हाट्स योर? माय फ्रेंड, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंस्टा बंद कर दो, देखो बाद में मालूम पड़ेगा इंस्टेंट तुम्हारे को लिविंग से हम स्कूल घर में बैठना सब ओके। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, फ्रेंड्स लर्निंग, ये सब देखो बाद में, लेकिन आफ्टर योर एग्जाम, ठीक है? पूरा पूरा अपना नहीं नहीं, एग्जाम के टाइम और एग्जाम के पहले रेगुलरली मत। ओके, नाउ लेट अस सी द चार्ल्स लॉ। ओके, Charles law है क्या basically? What is Charles law? Charles law states that the volume of a given mass of a gas, ठीक है? Volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature, ठीक है? Absolute temperature of the gas. Okay, what is the meaning of it? That means that the volume of a gas, अगर आपको increase करना है तो उसमें temperature also has to increase, proportional, directly proportional to the absolute temperature of the gas. Means what? Suppose you take a container. In this container, you take, for example, a piston, and this piston के अंदर ये gas enclosed किया तुमने. Let us say the volume, ठीक है? Volume of the gas is, let us say, for example, 100 ml. Let us say the temperature around it, ठीक है, is something like, for example, 300 Kelvin. इधर देखो, okay? Suppose, for example, यहाँ पे साक्षी ने क्या किया? इसको हीट किया गैस और टेम्परेचर, ठीक है? सुनो इधर देखो, टेम्परेचर went on increasing and she changed the temperature from 300 to 600. The moment she changed the temperature from 300 to 600, okay, what will happen? The moment she was supplying heat to this gas, अंदर का जो kinetic energy molecules का बढ़ता जाएगा.
जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा अंदर, बट प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। अब ये ना अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंस हो जाएगा। क्यों? देखो मत, सुनो इधर। So the moment pressure increases, now to actually keep the pressure constant, what the gas will do? These gas molecules are actually what? Desperate to, what is it? For example, pull up this volume so that the pressure becomes less. And immediately they lift this particular piston up. The amount of energy required to lift the piston is negligible. Why? We consider this piston to be frictionless, weightless. So जो भी gas actually what move कर रहा है वो against the opposing pressure, ओके, एक अपोजिंग प्रेशर को एक्चुअली ओवरकम करता है और वॉल्यूम क्या हो जाता है चिल्ड्रन, यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग देख रहे हैं कि इट बिकम्स व्हाट, ऑलमोस्ट डबल। यानी जो वॉल्यूम 100 ml था बढ़ के डबल हो गया, यानी 100 पे डबल हो गया 200 ml। इन अदर वर्ड्स द वॉल्यूम, ओके, वी हैव टू फाइंड आउट। अभी इससे डायरेक्टली मेजर तो नहीं कर सकते, बट हम लोग को अगर फाइंड आउट करना है तो चांस लोगों को कहना है कि अगर टेम्परेचर अपने बढ़ा है गैस तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए गैस व्हाट विल डू, इट विल एक्सपांड व्हाट आर द बाउंड्रीज टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, एंड इन द प्रोसेस, सो दैट मींस व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Volume is equal to what? KT. What is K? K is a constant of proportionality. So when you remove this proportional sign and change it to equal to, आपको एक constant introduce करना पड़ेगा. This constant depends upon the nature of the gas as well as what? Pressure, which is constant, as well as the mass, which is constant. ये K इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? Now, so V by T is equal to what? K. But suppose initial volume V1, temperature T1 is equal to K, final volume V2 and temperature T2 is also equal to K. Relating 1 and 2, what you will get? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 is equal to K. क्यों? ठीक है ना? ये आपको को मिल गया। अब तुमको ये सब्स्टिट्यूट करना है, ये सब वैल्यूज इसमें। लेट अस से इनिशियल वॉल्यूम कितना है जानवी? 100। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन आपने प्रोड्यूस किया, ऐड किया पहले से, उसके पास है रूम टेम्परेचर बोल सकते, ठीक है? अब यहाँ पे तुमने टेम्परेचर उसका डबल किया, 600 केल्विन कर दिया, जानवी ने 600 कर दिए, ठीक है? तो उसका हम लोग को फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? दिस इज व्हाट, 600 टू 300 टू यस और नो? 200 को इधर लेके आओ, दैट मींस व्हाट, दिस 200 ml आपको वॉल्यूम डबल हो जाएगा। That's why people are advised कि, for example, in the summer, people are advised that this is a car tire. In summer जब रहता है, for example, तो आपको समर में क्या होता है कि एयर का जो प्रेशर टायर में है वो कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कार रन करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, इट गेट्स दैट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, और अंदर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी गैस, और वो क्या होता है, थोड़ा इन्फ्लेटेड हो जाता है, और इसमें चांसेस है कि जहां पे रबर वीक होगा वहां से फट सकता है। इसलिए आपको समर में, क्योंकि बिकॉज बाहर का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है समर में, आपको ये गैस में जो टायर है उसमें थोड़ा हवा कम प्रेशर में, ठीक है, नहीं तो बर्स्ट आउट हो सकता है। That's why in trucks we find, for example, n number of excess tires. Why? Because the trucks carry the load. तो अगर एक टायर थोड़ा पंक्चर भी हुआ या थोड़ा सा, you know, for example, burst out little bit, then what will happen? दूसरा टायर उसको बैलेंस कर देगा. Okay, so that you know this is they are involving or they are loading, you know, huge amount of materials that should not be a loss for the industry or that the person who's trading that material, or you know they are taking one material from one place to the other. Okay, तो ये अपना, और विंटर में क्या हो जाता है, विंटर में आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना, बिकॉज विंटर में थोड़ा सा इन्फ्लेटेड भी रहेगा टायर, ठीक है, इन्फ्लेटेड यानी थोड़ा सा विंटर में क्या होगा, थोड़ा सा इन्फ्लेट करके रखो, तो विंटर में क्या होगा, ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विंटर में बाहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा हवा ज्यादा भी भरेंगे, प्रॉब्लम चार्ल्स लॉ। क्यों? विंटर में it becomes flat. That's why the Ola driver, they always check whether they actually pass when they start their vehicle first early morning. वो लोग सबसे पहले चेक करते हैं एयर प्रेशर, तो अगर कोई टायर फ्लैट दिख रहा है तो उसमें अपना हवा भरता है। हाँ, समर टाइम कम है, विंटर टाइम थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लेट है। रिमेम्बर,
ठीक है, वैसे साइकिल में, वैसे ट्रक में, सब में ऐसे करना by Charles law. Okay, this is called Boyle's law and Charles law. That means this is the volume versus temperature relation. Boyle's law was volume versus pressure. वो inversely proportional था. Okay, and this is directly proportional. अब दोनों का relation, if a gas obeys, then that particular gas is called ideal gas. When you obey all the, for example, at all the times to your parents, then you are an ideal child. Like mother tells you that get, for example, 1 kilogram of sugar from the market during the examination. तुम्हारा 1 घंटे में examination शुरू होना है. मम्मी ने बोला कि लेके आ जाइए, fetch 1 kilogram of sugar from the market, and you say, "Mommy, no, I have got examination." ठीक है? You are not an ideal child, because under this condition of crisis, okay, this is a test for you. Okay, Mommy, I will bring it. Nothing to worry. You don't trouble yourself. Your knee is paining, body is aching. Okay, I will go and get it from the market. Nothing to worry. Okay, but ये important चीज है. इन्हें तो मम्मी को जाना पड़ेगा बाहर. ठीक है? तो if suppose why they are telling you, because they are unable to go at that point of time. तुम उस टाइम obedience नहीं show किए, तो you are not. But these gases they obey all the time. We assume therefore they are ideal gases. तो जो गैस बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को ओबे करते हैं all the times under all condition of temperature and pressure, they are called as ideal gas. But of course these gases which are existing in nature are never ideal, because during this turbulence these gases will not actually what behave. Why? Because अगर तुमने pressure apply किया, ये gas liquefy हो गया, और gas liquefy हुआ means what? We cannot apply gas. Why? Because they are no longer gases, they become liquids. Okay, therefore, what is an ideal gas equation? B is directly inversely proportional to P. Boyle's law. This is Charles law. Combine इन लोगों दोनों को combine करो, क्या मिलेगा? B is directly proportional to T, but inversely proportional to P. Okay, therefore V is equal to KT upon P. We are changing the proportional sign to equal to sign, so introduce a constant. So what you will get? PV is equal to KT. Therefore, K is equal to PV by T. Yes or no? Therefore, we can say if initial pressure is P1, volume is V1, temperature is T1 is equal to K, and you change that. Pressure changes from P1 to V2, volume changes from V1 to V2, temperature may change from T1 to T2, that is also equal to K. ठीक है? आपको क्या मिलेगा? V1 upon T1 is equal to what? V2 upon P2. ठीक है? तो तुम कोई भी अपना जो भी प्रेशर वैल्यू वॉल्यूम है टेम्परेचर यू सब्स्टिट्यूट यू विल गेट द आंसर. ठीक है कि नहीं? That is so this. Let us see the problem based on this equation, but before that, and draw. For example, write down. Then we'll proceed further with the problems based on this particular graphical. Then the graphical representation of Charles law भी है, वो भी कर देते हैं. What is Charles law का representation? अगर volume versus temperature plot करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलो. A straight line. As we increase the temperature, what will happen? The volume also increases. But एक important चीज तुमको बताना है यहाँ पे. For example, this is what children quadrant. ठीक है ना? अब यहाँ पे आपने temperature in degree Celsius लिया और यहाँ पे आपने volume लिया. Volume versus temperature. But this is in Kelvin. This is in degree Celsius. Now we find a gas which is actually existing at certain temperature will occupy certain volume, और ये volume बढ़ता जाएगा जब temperature बढ़ता जाएगा. But as ये volume घटता जाएगा, temperature कम होता जाएगा, और एक time आएगा कि this temperature becomes minus 273. Sorry, minus 273. सच्ची इतना? Minus 273. माइनस का मतलब क्या है? We are running in minus degree Celsius, और ये टेम्परेचर पे the volume of all gases will almost become zero. And this temperature at T degree Celsius, which is minus 273 Kelvin, the T Kelvin will be how much? Is equal to minus 273 plus 273 will be equal to 0 Kelvin. Okay. That is all gases. You will say, sir, how they occupy zero volume? Because all gases, they turn into what?
solids or liquids. Means tomorrow, if suppose for example minus 273, okay, oxygen becomes what? Solid या liquid. Suppose ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा? चलो problem, crisis. Sir, oxygen. उधर के खाना पड़ेगा. Sir, oxygen. Am I right? What do you say? और फिर अगर liquid रहेगा sir, oxygen. I don't understand. Right? Generally, it's very much funny. Sir, oxygen. इधर से निकाला. Like ऐसा. वो जो सेव खाते ना. ऐसे सेव लिया. Can you imagine that scene where you will have oxygen in the solid or liquid state? Sir, पानी पी रहे. Tough job. Thank God. देखो पानी oxygen. तो ये imagine कि sir, ये oxygen लाया. क्यों? Because for surviving we need oxygen and not just alone water. So it's very tough job. But thank God, these gases are permanent gases. Oxygen, nitrogen or hydrogen. They are permanent gases. क्या होता है मालूम है? ये immediately liquid form में नहीं है. ये सब कुछ तुम्हारे friends हैं. तुम लाख बार उनको बुलाए अपने घर में. तुम आने में सही है. कब आते हो? लेकिन आती है नहीं. बोले सर कितने बार उन लोगों को बोला आने के लिए. कुछ रिलेटिव रहते हैं. सर tomorrow I will come. We'll all come. इतने साल हो गए आए. Permanent. Okay, permanent gases. Or likewise, for example, there are certain gases like HCl. तुम एक बार बोल दिया आ गए घर में. टपक गए घर में. और बैठ के खाना खाना शुरू. अब they are so intermingling. It is HCl, ammonia, carbon dioxide. एक बिन बुलाए मेहमान. एक बार तुमने आंखों में देख लिया वो फ्रेंड के. वो समझ लिया कि तुमको घर में बुलाना है. इमीडिएटली आ गया. यानी आंखों में बात हो गई कि अरे tomorrow you have to come because for some kind of occasion is there. And therefore, without invitation only they come. They are said to be what? They are very good gases. Why? Because without asking only they come, or without invitation. So you like it sometimes. I mean, sometimes people they don't like, but you like it. Why, sir? They have come and they have graced the occasion. It's a matter of HCl, chlorine, ammonia. These are very strong gases. They get liquefied. They are highly soluble. Okay, and then what they just don't come and eat. They try to help you out also. So I will help you out in this particular cleaning of this particular, let's say, your house, because your guests are coming. But these are बहुत बार बुलाने के बाद भी आए permanent gases. Okay, so देखो. So let us start with the numericals based on this particular gas law. उसके बाद today second lecture also I am having. Next lecture में क्या होगा आपको? You will have mass double lecture. ठीक है ना? Next week में. इसके बाद मैथ्स है ना वो अभी चेंज हुआ डबल लेक्चर केमिस्ट्री नेक्स्ट टाइम डबल लेक्चर मैथ्स ठीक है ना या फिर कुछ चेंजेस होगा तो यू कम टू द टाइम हां कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बट वो इसमें आता है ना सॉलिड फॉर्म में आता है और एक लोग नहीं आते तो लिखो चिल्ड्रन लिखना शुरू तुम बोलोगे सर -273 के नीचे क्यों नहीं आ सकते कैन टेल मी -273 के नीचे क्या प्रॉब्लम आएगा अगर तुम बोलोगे सर -273 के नीचे क्या प्रॉब्लम अगर तुमने इसको ये लाइन को नीचे एक्सटेंड किया तो क्या हो जाएगा ये वॉल्यूम है वॉल्यूम नेगेटिव में आएगा ना कैन वॉल्यूम बी नेगेटिव वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव दिस इज द अल्टीमेट टेंपरेचर द लोएस्ट टेंपरेचर व्हिच कैन बी अटेन्ड the gases. पलाश लिखिए ये मत ड्रॉ कीजिए ये सब तुमको सिर्फ अपना एक एक्सप्लेनेशन दूंगा okay let us start with the numericals of this topic इसके बाद सेमिनार पब्लिकेशन है लाइव है इधर है दलाल ने सेलिना पब्लिकेशन हम हमारे स्कूल में दलाल यूज कर रहे हैं सब लोग दलाल यूज कर रहे हैं चलो ठीक दलाल से लेकर हो गया सबका बना वजह से बस इसको यहाँ पे लीजिए ये आइडियल गैस इक्वेशन है चलो
Done. Good. हाँ, उसको भी सॉल्व करना है 12 मार्क को इतना मिस्टेक और सब लोग रिमेनिंग आंसर इधर सबमिट कर क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच कर आई वांट टू सी दैट क्वेश्चन पेपर सबका क्वेश्चन पेपर साथ में डाल मे बी सेम और डिफरेंट और सबका क्वेश्चन पेपर अटैच कर ले इसको उसमें नाम लिख लो यू विल गेट इट बैक बट जेरोक्स लिख दो ओके ये हां नाउ समझ में आया ना क्यों रिवीजन उसके पहले कर लो बिकॉज़ रिवीजन टेस्ट में आगे चाहिए रहेगा नहीं सर कल तो केमिस्ट्री का हाँ वही रिवीजन टेस्ट के बाद जब भी आई हैव टू दे देना ओके ये सर बाकी सारे सब्जेक्ट भी हम छेड़ेंगे का सोच हाँ ये अरे ये भी तो सब्जेक्ट है सर तो पता नहीं कि कौन सी तरह अरे उसमें देखो आंसर पेपर पेपर मतलब सीखने वाला अच्छा तो पूरा पेपर लिखो फिर से करेक्ट आंसर ये ना ओपन बुक ये ना आपको मैं से डिस्काउंट तक कर रहा है हाँ नहीं पूरा बुक है ना फिर भी लिखो पूरा आंसर पेपर लिखो ठीक है हाँ अभी नेक्स्ट अभी आज क्या डेट है टुडे इज व्हाट वेडनेसडे ना वेडनेसडे नेक्स्ट वेडनेसडे आपको सबमिट करना है ठीक है कौन सा डेट है वेडनेसडे टुडे इज व्हाट हाँ 19 को सबमिट हाँ कितने बार लिखना है 5 बार लिखना है सर जिनको 50 के ऊपर है वो भी 5 बार तब जाके तुम्हारा मार्क्स आएगा क्योंकि बाद में नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं होगी नेक्स्ट टाइम मिस्टेक और पहले बार हुआ सर कोविड के बाद whatever may be the thing. Let us start working on this. Again, numerical based on Boyle's law. So let us start working on this. Okay? अच्छा problem ले लेते हैं. At constant, let me write this problem. Have you done this? Written? सब लोग ने लिखा है? So now numericals. देखो numerical section. हम कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा अब सर अभी सीएफसी चल रहा है हाँ इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि अंदर ऑक्सीजन चाहिए ना तो फैन से क्या होगा सबको चलो at constant write down this question volume of a given mass of a gas was found to be 400 centimeter cube at a pressure of 760 mm. If the pressure of the gas is increased by 25%, तो 25% pressure बढ़ा दिए, ठीक है? Find a new volume. ठीक है? Now, let us see this. All of you understand which is the law. How will you find out ये law Boyle's law कि Charles law? ये देखो अभी क्या लिखा है कैसे मालूम पड़ेगा स्नेहल Boyle's law temperature is constant. That constant temperature volume and pressure का relation build किया है it is Boyle's law ठीक है ना अगर temperature constant रहेगा volume और pressure दिया रहेगा आपको तो definitely you have to find out the और final statement में क्या रहेगा P1 and V1 just listen it carefully
ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर का यूनिट mm मर्क्यूरी. Okay, so according to Boyle's law, suppose for example, let us understand this. You've taken a cylinder with a piston over here, ठीक है, और इसमें तुमने गैस कुछ दिया है, which is having a volume of how much children? Volume is 400 centimeter cube. ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखिए मत, पहले सुनिए. First you to listen to it. Okay, then apna, I will give you some time to refer that, and of course there is a book also. Nothing to worry. See, the diagram nahi diya. Then what is the pressure? इसके ऊपर जो दबाव create किए हैं is nothing but what, 760 mm. What is 760 mm? 760 mm is nothing but what, 1 atmospheric pressure. In the atmosphere जो pressure है, जो column of air जो हम लोग के सर पे लगा है, column of air is nothing but pressure. जो 760 अगर है तो it is 1 atmosphere. ठीक है, because ये अगर अर्थ है तो एक column of air, एक particular column of air, ठीक है, of air is actually pumping that particular, or is applying a pressure on the earth crust. ठीक है, ये है तो that particular pressure which is coming from the atmosphere is called atmospheric pressure. Since coming from the atmosphere, इसका एक unit atmosphere में, and वो 1 atmosphere is equal to 760 mm. 1 atmosphere को हम लोग 760 बोलते हैं सर, या फिर हम लोग 76 सेंटीमीटर. जैसा $1 80 रुपया हो गया या 81 रुपीस हो गया, जो भी हो गया, तो हम लोग ऐसे ही एटमॉस्फेयर इज 76 सेंटीमीटर. ठीक है ना, तो ऐसे याद रखना. ओके, तो 760 ले लो या 76 सेंटीमीटर, बट इट इज 760 गिवन mm में. Now what we do, if the pressure of the gas is increased by 25, आपने क्या किया, ऊपर से दबाव बढ़ा दिया. कितना, 25% of 760, यानी आपने वो 760 से ऊपर 25% उसके ऊपर बढ़ा दिया. So what is 25% of 760 children upon 25 upon 1% का मतलब क्या है, पहले मैं ऐसे लिखते हैं 25% of 760. ठीक है ना, therefore that is nothing but what is percent, 100%. Yes, that is divided by 100 of 760. Come on, what is it? 10. 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 8s are 16. How much is it? This is 8 5s are 40. This is how much? This is how much? 50. 190 mm pressure आपने बढ़ा दिया, but ये नहीं लेना है 760 plus 190, क्योंकि इतना बढ़ गया ना सर. My marks have increased by 25%. यानी आप पहले 760 मार्क्स मिला था, अब उसका 25% बढ़ गया है, राइट? That means आपको क्या करना पड़ेगा, तो what is the final pressure? Final pressure P2 is how much? 760 plus 190, कितना हो गया? 950. हाँ, 950. Very good, 950 mm pressure. Initial pressure कितना पलाश? 760. आपने 25% इसका बढ़ा दिया, 950 कर दिया. ठीक है कि नहीं? Okay. And what is the volume initially? Volume was 400 ml. ठीक है ना? सेंटीमीटर क्यूब में ml. तो आपने जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, राइट ना? प्रेशर बढ़ा. That means what is the new volume? We have to find out. So according to Boyle's law, what is the Boyle's law, children? Boyle's law का फॉर्मूला क्या है? According to Boyle's law, what is that? V1 is equal to P2. What is P1? P1 is how much? 760. What is V1? V1 is 400. What is P2? 90. What is V2? Please calculate it. Tell me. Use your normal division method and tell me what is the answer. ठीक है? चलो start करो. पहले वो लिखिए, diagram बना लीजिए, write down the question so that when you are having the question, you are able to think about it. T20.
320. Good. 3 centimeter cube. Na? Let others do and then we'll start. Five eight some 40, 5 1 the 5, 9, 19 कितना बच जाएगा? 4. 4. That is 43, 20 centimeter. Again. Right? Very simple. One. I have problem tough here because normal degree substitution you will come to me. It's no problem. Okay. Will we? Let's see this next question. There you are. Ideal gas equation सबने लिखा? आकांक्षा, right? गया ना? Clear? Let's come to the next one. I like the question so that आपको easy पड़ेगा. Question number 2. Write down all of you. A vessel of a capacity 600 centimeter cube contains hydrogen gas at the pressure of 304 centimeter cube mercury. What will be the pressure of hydrogen gas when the vessel is connected to another vessel of 300 centimeter cube capacity. All right. Let us see the diagram over here. The diagram हम लोग बनाएंगे इससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. You to understand that. ठीक है ना? सबने लिखा? कुछ नहीं लिखा. देखो
Okay. Now, let's see, for example, here a vessel is there. It is having a capacity of 600 centimeter cube of the gas, which is hydrogen over here. Okay, इसको बंद किया. इसका volume कितना है? 600 centimeter cube, and the pressure at which this particular, for example, the gas is actually what providing. gas के अंदर जो pressure develop हुआ है, उसका कितना है? It is 304. यही गैस अगर हम लोग 300 ml में डालते हैं, ठीक है ना? सॉरी 600 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, तो अगर 304 उसका प्रेशर, सॉरी प्रेशर, 300 सेंटीमीटर क्यूब मर्क्यूरी का प्रेशर यहाँ पे, ठीक है? तो अगर यही स्मॉलर सिलेंडर में डालते थे, यानी अलग से रखते थे, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम कितना है? 300. अगर अभी इन लोगों को कनेक्ट नहीं किया, जब कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, इसका विदाउट कनेक्शन आपको कितना प्रेशर है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज व्हाट? V2, प्रेशर इज हाउ मच? P2. दिस इज P1, दिस इज V1. First, without connectivity, we have to see what is the volume, what is the pressure over here. So P1, V1 is equal to P2, V2. What is P1? P1 कितना है? 304. What is this V1? 600. What is P2? We to find out. What is V2? Come on, P2 find out. 608. Direct pressure आएगा, यानी 2 times करेंगे तो 60, right ना? अब क्या कर रहे हैं? इसको कनेक्ट कर रहे हैं. What is that? What will be the pressure? ठीक है? Of hydrogen gas when the vessels are connected. ठीक है? तो सोचो यहाँ पे कनेक्टिविटी, अगर इधर टैप रख दिया तो बिना टैप किए ने, पहले टैप था तो इसीलिए इसका प्रेशर ये था, और यहाँ पे प्रेशर ये टैप ओपन कर दिया. टैप ओपन करने के बाद क्या है? You'll find the pressure, the volume, total volume कितना है? 900 centimeter. So now let us see what is this. P1 is equal to P2. So what is P1 over here, children? P1 is how much? 600. What is P1? 304. What is P2? अभी देखो यहाँ पे P2 हम लोग को फाइंड आउट करना है. अब इम्पोर्टेंट चीज, इसका V1 और इसका V2 दोनों ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 900. Now find out P2. How much is it? 202.77. Yes, 20. It says 608. Actually calculate करने की जरूरत नहीं थी, directly connectivity को मिल गया. Okay, but I don't know why they have calculated, so that's not required. But still, आपको मालूम पड़ रहा है प्रेशर ज्यादा हो जाएगा यहाँ, definitely. ठीक है? So last question for this Boyle's law. ठीक है ना? Write down at constant. Now this problem you will do without seeing. At constant temperature. At constant temperature. Okay, yes. A gas is at a pressure of 1080 mm mercury. If the volume is decreased by 40%, decrease हो रहा है इस बार, आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस. Decreased by 40%, find the new pressure. Yes. The question लिखिए. Don't see the answer without seeing it. Right. This is called as
Surprised. Sadba. What is Sadba? Surprise closed book, closed textbook assignment. और एक है surprise open textbook. Sadba. Sadba is nothing but what? Surprise open textbook assignment. और ये book पर क्या? तो book किधर है? इसीलिए आपको अपना पूरा उसमें ये नहीं आ रहा, कंटिन्यूटी नहीं मिलती. Maintain a continuity by maintaining the book. So Janvi, give me the answer. Sachi, give me the answer. Akansha, give me the answer. So सब लोग आंसर देंगे individually. कोई भी बुक में नहीं देंगे. It's like a test for you. कौन-कौन एब्सेंट है आज? तालियां मान्या है. रणवीर क्या होगा हम लोग को? मान्या. तालियां. सर 1800. हाँ? 1800. 1800. 1800. Let us see. 1800 आ रहा है. पहले what is the pressure at constant level gas? Is the pressure of what? So let us see, for example, pressure P1 is equal to solution. The calculation. Calculation क्या है? P1. Let us say V1 is equal to V, right, sir? So what is P2? We have to find out. What is V2? It is 40% reduction of what? Of 1080. 40% of what? 1080. 00 gas. 2 5s are 10. 2 5s are 10. 2 4s are 10. 5 8s are 8 4s are 32. 430. This is 8 5s are 40. 40. Okay. There is a volume in centimeter cube. Okay. So V2 is nothing but what? 432 is 40%, right now? 40% is final, but here final pressure volume nahi hai. Volume is nothing but what? 40% less than this. That means what? V minus what? Right now? It's a minus 40% less हुआ ना? 430 to 40% of this 1080 mm है ना? Yes. Final volume नहीं वो pressure है sorry. Final volume हाँ ये. Now let's say what is that? V1 right. V1 कितना है? 1080. What is V1? V. हाँ नहीं V है ना? Okay. What is V2? V2 is nothing but V minus 430 into V2 is how much? V2 find out. Barabar? Let's see 1080 into V और V कैसे लेकिन V कुछ दिया है क्या? नहीं दिया ना? एक V कुछ दिया है कि नहीं? हमें ओरिजिनल वैल्यू 100 ml लेनी पड़ेगी. ओके ओरिजिनल वॉल्यूम 100 ml ले लेते हैं. चलो
original volume 100 ml. So now original volume 100 ml लिया, तो कितना हो जाएगा? 60% of 100 ml is full. 40% of 40%. 60. 40. अच्छा 1080. Sorry, very wrong over here because here ये क्या है? Pressure है. हम लोगों ने volume के साथ pressure को जोड़ दिया, वो wrong हो गया. 40/100 into what? 100. Right ना? That means 40 ml. 40 ml. But final volume कितना है? Reduced by reduced to it. Reduced to decrease to 40%. 100 minus 1. That means final volume is how much? 100 minus 40, 60. 60 ml तुम्हारा बच गया. ठीक है? Now just see this. V1 is equal to what? V2. So 100 into 1087 is equal to 60 into P. Okay. Reduce to लिखा है कि reduce by लिखा है? By लिखा है ना? Minus का. Reduce to लिखा है. यही वॉल्यूम लेना पड़ेगा. Reduce to, reduce by लिखा है तो माइनस करना पड़ेगा. 100 minus. और अगर reduce to है तो that is the same volume you have to take. Same volume. Whatever. ठीक है? Now just say this. V1 is how much? 1080. Sorry. V1 is how much? 100. What is V2? 60. V2 is how much? 60. V2. Yes. So what is the value of P2? How much is it? 1080 into 100 upon what? 60. 0 flat. ठीक है? Let's say कितना हो जाएगा? 6 months are 6. 4, 6 8 are 48. 180 आ गया. Okay, 180 into this 1800, right? Huh? 1800 and what? Pressure is how much? What unit? Yeah, mm mercury. ठीक है? Charles law. इधर समझ रहे हैं? एक प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं. हाँ. ओके. कितना बज रहे हैं? 7:75. हाँ, तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं. Let us see Charles law for a change. Charles law में पहला problem. Let us see. Okay, here. Very simple question I will give you. And थोड़ा सा tough question because all of you are genius. Now, question number 4 पे जाते हैं because for 1 and 2, 3 are remaining same. Calculate. ठीक है? Calculate the volume of air. Okay, in centimeter cube. Where in centimeter cube expelled from a vessel. From a vessel containing 0.4 liters. Human being ने weight at 250 when heated to 27 degrees Celsius at the same pressure. Nehal, इस बार क्या law use कर रहे हैं? The same pressure. Pressure is constant this time, not temperature. So it is Charles law. Okay. So what is Charles law? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 according to Charles law. ठीक है ना? Palash, what is the volume of air expelled from a vessel containing 0.4 liters of it at 250 Kelvin? So हम लोग को यहाँ पे 4 liters of air इधर 0.4. ठीक है ना? टेम्परेचर कितना है चिल्ड्रन? 250. टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया 227 कर दिया. 27 plus 273 फाइनल 300. वेरी गुड. इधर लिख दो 300 केल्विन.
क्या हो जाएगा? कैंसल. This is 5 5 is 25, 5 6 is 30. Okay, V2 is equal to what? 0.4 into 6 upon what? 5. Yeah, come on. 4 6 is 24. 2.4 upon 5. Yes or no? Okay, so how much is it? Point. Whatever. 5 4 is 20. Here 5 8 is 0.48 final volume. पहले कितना था? 0.4. अभी कितना हो गया? 0.48. बट कैपेसिटी कितना है? 0.4 का ही है. हम लोग ने वेसल that means final volume V2 minus V1 is a change in the volume, that means it's expelled. What is the final volume? 0.48 minus 0.4, that is how much? 0.08 liters expelled. Now break fresh mind, some more problems on ideal gas equation as well as Charles law. ठीक है ना? शिवेश, आपको जाना नहीं है, कंटिन्यू लेक्चर है. सर इधर बोला शेष हेलो, क्या हुआ शिवेश? कौन सा क्लास है? नहीं, जाना नहीं है आपको.